everyone. So I welcome you all to this video. So in this video, what we are going to study? So basically, we are going to study a new unit that is going to be wave optics. So before that, हमें optics के बारे में भी पता होना चाहिए. But if in case you have not watched the previous videos and अगर harmonic oscillator is there in your syllabus, so what you need to do? So basically, just watch those videos also. So they are already there in the channel. And so now in today's session, we will be studying about the wave optics. And yes, so wave optics थोड़ा सा lengthy topic होगा, but yes, that's going to be quite interesting also because we have already, or you students must have already studied about that in your grade 12. Okay, so in that case, let's move to our topic without wasting any further time. So let's start with the optics part first. So firstly, what exactly is optics? So whenever we talk about optics, so optics हमें basically बताती क्या है? So it is basically a branch, we can say branch of physics which deals which deals with the study of deals with the study of of light and phenomena related to it and phenomenon related to it related to light. So that is basically termed as optics. Whenever we talk about the types of optics, so we do have two types of optics. So, or like we can say types of optics. So since we all know that okay, light का dual nature होता है, and जो dual nature है, that is because of the different types of optics. So we can say that can be all characterized or that can be divided into two types of optics. First one is going to be termed as geometrical optics, and second one is termed as physical optics. So in your grade 12, so everyone must have studied about कि हमारे पास दो types की so basically light का dual nature होता है, and whenever we talk about the dual nature of light, so dual nature means that means या तो हमारी जो light है वो ray के जैसे behave कर सकती है या फिर वो wave के जैसे भी behave कर सकती है, correct? So whenever we talk about the dual nature, so उसमें सबसे पहले क्या आता है? Geometrical optics. So basically geometrical optics जो है उसका so what we can say the ray nature or we can also call it as particle nature. Okay. So now over here what we can say that so geometrical optics is basically an evidence for particle nature of light, for particle nature. Okay, जिसमें हम rays के बारे में बात करते हैं. And whenever we talk about the physical optics में हमारी wave के जैसे हमें behave करती है light. So what we can say, it provides us the evidence for wave nature. Evidence for wave nature. Okay, so now let's start with our today's. So the very first topic, whenever we talk about wave optics, okay, जब हम वेव ऑप्टिक्स पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं. या तो हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, या तो हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन, and other than that there is one more thing that is going to be polarization. Okay, या तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. So in today's session what we are going to study, so we are going to study about the interference. And जब हम interference की बात करते हैं और क्या हम इसमें पढ़ेंगे, so we are going to talk about the types of interference. Other than that, we can say we will be studying about the conditions related to it, conditions for interference. Then we can say that okay, so after this, so coherent sources, and then we can say methods to obtain coherent sources. So why we have to study about the coherent sources, so you will also get to know. So methods to obtain coherent sources. So these are the topics that we are going to study. Okay, so firstly let's start with the interference part. So जब भी अब हम interference की बात करते हैं, interference, so basically ये हमारा किसके अंडर आएगा? So this has to come under the, we can say that okay, so it has to come under wave optics itself.
अब इंटरफेरेंस क्या होता है हमारे पास? इंटरफेरेंस का बेसिक सा मतलब क्या है? एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सो इंटरफेरेंस होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए कोई कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए, लाइट। ओके सो या सबसे पहले वी कैन से दैट लाइट हैज टू बी कोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट होगी, लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम frequency and and nearly same amplitude, same amplitude, same amplitude. So the intensity of light, the intensity of light is redistributed in space, is redistributed in स्पेस। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, लेट्स कंसिडर हमें इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो टू कोहेरेंट लाइट वेव्स होनी चाहिए जिनका हमारे पास, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी एंड दे आर गोइंग टू हैव नियरली सेम एम्पलीट्यूड। ओके, उनका एम्पलीट्यूड भी नियर बाय क्या होगा, सेम होगा। ओके सो अब यहाँ से लेट्स कंसिडर कि हमारे पास दो लाइट वेव्स, ठीक है, सो वी कैन से कि I1 एंड I2 उनकी इंटेंसिटीज हैं। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से, जो जब हमारा इंटरफेरेंस होगा तो हमें दो चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं। या तो हमारे पास होगा कि जो टोटल इंटेंसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल, ठीक है, या तो हमारे पास क्या होगा, जो टोटल इंटेंसिटी होगी दैट हैज टू बी लेस। तो अब यहाँ पर जब हमारे पास ज्यादा होगी कम होगी, सो लाइक वो कैसे हमें पता लगेगा, दैट वी विल गेट टू नो लेटर ऑन। सो अगर लेट्स कंसिडर कि हमारे पास जो वी कैन से आई इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, ओके, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमा। Similarly, if in case I is less than I1 plus I2, at that time what we can say, we are going to get minima. अब जो maxima और minima का केस है, so this maxima and minima case depends upon what? So it is going to depend upon two things, कि हमारी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, एंड इसी के बेसिस पर हमें क्या मिलता है, हमें टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मिलते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ओके सो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास when we have equal amplitude and equal frequency, so when they are going to superimpose each other, then resultant light vector will provide us the maxima and minima, and that is going to only tell us about the different types of interference. So since we do have two types of interference, first one is going to be the constructive, and second one is going to be destructive, destructive. ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट थिंग यहाँ से हमें मिल जाएगा मैक्सिमा, एंड सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के केस में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा मिनिमा। ओके अब यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी आर गोइंग टू हैव टू वेव्स आर आर सुपर imposed इन सेम फेज, इन सेम फेज, ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास दो वेव सेम ही फेज में सुपर इम्पोज होंगे, लेट्स से कि हमारे पास ये दो वेव्स हैं, ओके सो लेट्स मेक देम क्वाइट सिमिलर, ओके और वी कैन डू इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है, सो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास वेव्स हैं, सो अब यहाँ पे जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट समहाउ दिस टाइप ऑफ वेव। ओके तो ये हमें वेव मिल जाएगी। अब सिमिलरली तो अब यहाँ से जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट वी कैन से, टू वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड इन ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज, ठीक है, ऑपोजिट फेज में जब हमारी दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमा आल्सो। तो लेट्स कंसिडर कि एक वेव हमारी कुछ ऐसे है एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी like this. Okay, अब ये जब दोनों मीट करेंगी तो they are going to make a provide us minima, or we can say it's going to give us the destructive interference itself. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, so at that time we can say phase difference
between difference between constructive interference is, or we can also say that phase difference in constructive interference is integral multiple of 2 pi. Okay, since that's going to be the integral multiple of 2 pi, where n can start from, we can say, or we can 2 pi, which is going to be even itself, 2 pi n. Okay, so since we have mentioned that, okay, so that is going to be an integral multiple. So we, if in case we are not going to mention it over here pi, so that means what we can say that अपने पास क्या आ जाएगा 2n pi. तो अब जो यहाँ पर n है, n can start from 0 and so on up to. Okay, similarly जब हम destructive interference की बात कर रहे हैं, so in case of destructive interference, what we can say that in this case, so it will be equivalent to, we can say that delta will be equivalent to phase difference. So this del will be equivalent to what? So that is going to be 2n plus minus of 1 pi. ओके, अब जब हमारे पास n की वैल्यू होगी 0, व्हेन n इज इक्विवेलेंट टू 0, तब हम क्या यूज करेंगे 2n plus 1. सिमिलरली व्हेन n is equivalent to 1, so at that time we are going to use 2n minus 1. So that means हमारी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? So that is going to start from 1 itself. Okay, so from here what we can say, so this implies यहाँ से delta will be equivalent to 2n plus 1 times pi. So which will be equivalent to pi, 3 pi. So that means हमें कैसे मिलेंगे? यहाँ पर we are going to get the odd multiples, and similarly in this case we are going to get the even multiples. Okay, so after this, now let's move on to the next thing, that is going to be the condition for interference. Condition for interference. So what's going to be the condition for interference? So यहाँ से what we can simply mention, so we can say, अब like if in case we talk about जब हमारे when we talked about in your grade 12, so you must have studied about Young's double slit experiment, correct? यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इफ यू रिमेम्बर थोड़ा सा भी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो उसमें हम क्या कंसिडर करते थे कि हमारे पास इंटेंसिटी I1 का हम एम्पलीट्यूड मान लेते थे A1 स्क्वायर, सिमिलरली I2 का इंटेंसिटी लाइट का एम्पलीट्यूड मान लेते थे A2 स्क्वायर. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, व्हाट वी कैन से इंटेंसिटी, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमें लास्ट में मिला था, दैट वाज I इज इक्विवेलेंट टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 प्लस I1 I2 cos del. करेक्ट, दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी गॉट. सो अब I1 I2 क्या था हमारे पास? सो हियर I1 वाज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट वेव, ऑफ फर्स्ट लाइट वेव. Similarly, I2 is intensity of second light wave. And del क्या है हमारे पास? So we can say that is the phase difference between these two interfering light waves. ओके, सो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस के लिए. सो व्हाट वी कैन से, अब यहाँ पर कंडीशंस ऑब्वियसली एक डिस्ट्रक्टिव की होगी, एक कंस्ट्रक्टिव की होगी. तो चलते हैं सबसे पहले, लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में. सो व्हाट्स गोइंग टू बी द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस?
ओके, सो कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? तो एक चीज का वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम। करेक्ट, हमें क्या मिलेगा? हमें मैक्सिमम मिलेगा। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से कॉस ऑफ डेल विल बी इक्विवेलेंट टू 1। मैक्सिमम वैल्यू, सो कॉस की कहां से कहां, सो बेसिकली द वैल्यू फॉर कॉस लाइज इन बिटवीन -1 टू +1। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारे पास कॉस की? दैट इज गोइंग टू बी 1 itself. So what we can say, del will be equivalent to 2 since del is 2 and pi, and here n is going to be 0, 1 and it so on up to. यही होता है हमारे पास। Okay, so that means phase difference. So from here what we can say, I max will be equivalent to I1 plus I2, correct? Plus since twice of under root I1 I2 cos of, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos डेल को हमने क्या मान लिया? 1 कंसिडर कर लिया। ओके, तो अब यहाँ से हमें एक चीज हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर दैट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें मैक्सिमा मिलता है। करेक्ट, तो अब मैक्सिमा क्या होगा? सो ऑब्वियसली हमारे पास जो आई मैक्स होगा वो क्या होना चाहिए हमारे पास? सिंस जो इंटेंसिटी है दैट हैज टू बी द सम ऑफ टू इंटेंसिटीज, बट वो किससे एक्सीड कर रही है? वो इससे एक्सीड कर रही है। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, आई इज ग्रेटर देन I1 plus I2, I1 plus I2 by twice of under root of I1 I2, इसी से वो इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली अब अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, ये क्या था? डेल हमारे पास क्या था? डेल वाज द फेज डिफरेंस। एंड पाथ डिफरेंस हमारे पास होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पाथ डिफरेंस? तो पाथ डिफरेंस का, सो बेसिकली वी कैन से डेल्टा विल बी इक्विवेलेंट टू लैम्डा ओवर 2 पाई टाइम्स डेल। ओके, सो अब यहाँ से व्हाट वी कैन से, लैम्डा ओवर 2 पाई टू n pi. Correct? So pi से pi cancel out, 2 pi से 2 pi cancel out. So we are left with what? Lambda times of n itself. So what we can say, del. Also, this delta del will be equivalent to, we can say that part difference is equivalent to lambda times of n itself. अब यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास? n is going to be 0, 1 and it's so up to. Okay. So similarly, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं for destructive interference condition for destructive interference. ओके, जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं एट दैट टाइम, सो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? फेज डिफरेंस डेल्टा इज 2n plus 1 times of pi. Correct? So यहाँ पर cos del will be equivalent to negative of 1. So similarly अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? So what we can say, that del will be equivalent to, since that is going to be pi, 3 pi, then 5 pi. Okay. So अब अगर हम similarly यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं तो I minimum हमारे पास कितना आएगा? So I minimum will be equal to I1 plus I2 minus of twice of under root of I1 I2. So that means what we can say, I is less than I1 plus I2 by twice of under root of I1 I2. So इससे अभी एक चीज को हम और ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किसकी बात करी? हमने फेज डिफरेंस की बात करी। सो नाउ इफ इन केस वी टॉक अबाउट द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, so that will be, so what we can say, that delta will be equivalent to 2n plus 1 lambda over 2. Okay, so that means delta will be equivalent to lambda over 2, 3 lambda over 2. Then we can say 5 lambda over 2 and it so on up to. Similarly, like यहाँ से हम बोल सकते हैं that delta will be equivalent to del times of lambda over 2 pi, and del is 2n plus 1 times of, you can say, pi into lambda over 2 pi. Okay, so pi se pi gets cancelled out. So we are left with what? We are left with only this lambda times of 2n plus 1 over 2. Okay, so this is going to be the relation in between the path difference and phase difference. अभी हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया, like when we were talking about constructive interference and destructive interference. ठीक है, तो जब हम आई मैक्स और आई मिनिमम की बात कर रहे थे, आई मैक्स, सिंस आई मैक्स वाज इंक्रीजिंग बाय ट्वाइस ऑफ I1 I2, and similarly I minimum, you can say,
that I minimum was decreasing by, okay, yeah, I minimum was decreasing by twice of I1 I2. तो यहां से हमें क्या चीज पता लगती है, दैट gain for maximum is loss for minimum, is loss for minimum. So इससे हमें क्या पता लगा, so from here also we can say that, so like from here light energy will remain conserved, will remain conserved. So from here what we can say that, okay, यहाँ पर भी law of conservation of energy हमारी follow हुई है. Okay, now after this let's talk about, since हम यहाँ पर बहुत बात कर रहे हैं that okay तो हमारा light source कैसा होना चाहिए, coherent होना चाहिए. So coherent source actually होता क्या है हमारे पास, so whenever we talk about the word coherent source, so coherent source is basically, or we can say two sources are said to be coherent then, so if they emit light, if they emit light waves of same frequency, of same frequency and nearly same amplitude, and nearly same amplitude and phase difference, and phase difference should be should be zero और कांस्टेंट. ठीक है, सो हमारे पास दो सोर्सेस कब कोहेरेंट होंगे, या तो एक चीज जब भी हमारी लाइट एमिट होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट थिंग सेम होगी एंड दे आर गोइंग टू हैव नियरली सेम एम्पलीट्यूड विद अ फेज डिफरेंस ऑफ जीरो और कांस्टेंट. ओके, सो एंड ऑल्सो फॉर, इफ इन केस वी टॉक अबाउट इंटरफेरेंस फॉर इंटरफेरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कोहेरेंट सोर्सेज आर एसेंशियल. कोहेरेंट सोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर कोहेरेंट नहीं होंगे सो एट दैट टाइम हमारे पास नहीं होगा. ओके, बिकॉज लाइक एक होता है जैसे हमारे पास कोहेरेंट हो गया, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट के केस में हमारे पास क्या होगा, सो बेसिकली फेज चेंजेस विद टाइम, फेज चेंजेस विद टाइम. ओके, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जब कोहेरेंट सोर्स कैसा होता है हमारे पास, और लाइक इफ इन केस वी टॉक अबाउट कि इनकोहेरेंट कैसा होगा. तो देखो कोहेरेंट सोर्स हमारे पास कौन सा होता है, लेट्स से कोहेरेंट. ओके, हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोडियम लैम्प. ओके, सो हमारे पास सोडियम लैम्प है, लैम्प इटसेल्फ. ओके, सोडियम लैंप में से हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है एंड हमने उसे क्या करवा दिया, हमने उसे स्प्लिट करवा दिया दो पार्ट्स. ओके, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, हमने उसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करवा दिया, सो दैट इज गोइंग टू हैव अ कोहेरेंट सोर्स. सिमिलरली अब अगर हम इनकोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं तो इनकोहेरेंट सोर्स क्या होगा हमारे पास, इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट क्या होगा कि हमारे पास क्या है, दो सोडियम लैंप्स, वी डू हैव टू सोडियम लैंप्स एंड हमने क्या किया, इन दोनों से हाफ आ लाइट वेव्स को ले लिया. ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया था, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से टू लाइट वेव्स ली थी, टू लाइट वेव्स we got it from here. But if in case we are having incoherent source, तो वहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सोडियम लैंप्स है, so both of them are going to have what, so basically क्या हो गई हमारे पास, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो गए, two independent sources are there, two sodium lamps है तो, okay, and two independent sources cannot give us a coherent source of light. Okay, so that's why what we can say कि ये हमारे पास अगर है obviously, so we are having sodium lamps only, but they cannot give us the same amplitude, same frequency light waves. Okay, so that's why coherent sources एक ही source से निकलने चाहिए, light waves एक ही source से होंगी तभी at that time we can say they are going to be termed as coherent source. Okay, now if in case we have to obtain coherent source of light, so how we can obtain that, methods to obtain coherent source of light, coherent source
ऑफ लाइट। ठीक है, सो हम दो टाइप से ले सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन से फर्स्ट होता है हमारे पास बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। सेकेंड मेथड इज गोइंग टू बी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इनमें से आपने कुछ पहले भी इन योर ग्रेड 12 यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जैसे लाइक इफ इन केस वी टॉक अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर हम यही तो कर रहे थे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का ही तो डिवीजन करवा रहे थे हम। ओके, सिंस बेसिकली क्या होता है कि वहां पर सिंगल स्लिट illuminated by illuminated by monochromatic monochromatic source of light, source of light, then we do get two slits. Correct, यही हो रहा था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। सो इसका बेस्ट एग्जांपल वी कैन गिव अस दैट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट double slit experiment, या फिर we can also say that okay that's going to be Fresnel by Fresnel by Prism. That also you must have studied in your grade 12th itself, जिसमें हमारे पास क्या था, एक single source, or like we can say that a single source is being used to generate two coherent sources. Correct. Similarly, now if in case we talk about, if in case we have to talk about the division of amplitude. So in this case, what's going to happen? So intensity of incident light of incident light is divided into is divided into two parts. Okay. So like for these, what we can say, these light beams basically superimpose afterwards, and they produce the interference patterns also. Like the best example for this, we can say that Michelson experiment also. Okay, and we can also say Newton's ring. Okay, so Newton's ring. So Newton's ring में basically हमें last में कैसी observation होती है, Newton's ring के case में, Newton's ring. So Newton's ring we have to study in detail also. However, we will study that part also. So basically Newton's ring के case में हमारे पास क्या होता है? So एक monochromatic source of light होती है. Okay. So when it's going to strike, यहाँ लेंस पर वो आई, इंसिडेंट हुई रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक ग्लास प्लेट होती है विच इज बीइंग टिल्टेड एट 45 डिग्री एंगल, ग्लास प्लेट, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस एंड सो आई एम गिविंग यू जस्ट अ रफ आइडिया इटसेल्फ, हाउएवर वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल आल्सो। सो यहाँ पर ये हमारे पास लाइट वेव्स आ गई। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद व्हाट वी कैन सिंपली ऑब्जर्व कि यहाँ पर आने के बाद, तो यहाँ पर वी कैन से दैट वी डू हैव, ओके, सो कुछ लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मेड इन सच अ वे कि हमारी जो ये लाइट वेव्स आई हैं, ये हमारी कितने पार्ट्स में चल जाएंगी, सो दे आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक ऊपर जाएगी और एक नीचे रे ऑफ लाइट आएगी। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन सिंपली से, ये हमारी यहाँ पर इस पर फॉल करेंगी। Okay, so however, they have to be a straight itself. Okay, so that we will also study later on. Okay, so ये कुछ हमारे so what we can say, ये हमारी ray of light कुछ ऐसे आएंगी, and उसके बाद जो हमारे पास हमें interference का pattern observe होगा, that is going to be in the form of concentric circles. ठीक है, interference pattern will be observed in concentric circles की फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होगा। और यहाँ पर ये क्या था, हमारे पास ग्लास प्लेट जो टिल्टेड है 45 डिग्री की एंगल पर। ओके, एंड ये हमारे पास वी हैव कंसिडर्ड दिस एज एयर फिल्म, और यहाँ पर तो वी कैन से ये हो गई हमारी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, एंड दिस वाज आवर लेंस। ओके, हाउएवर वी विल स्टडी अबाउट द न्यूटन्स रिंग की पूरी एंटायर वर्किंग कैसे होती है। Okay, that we will study. So like what we can simply say that okay, so
light beams, these light beams superimpose afterwards, and produce interference pattern. Okay, and one more example we can take, like if in case we have to talk about the division of amplitudes, so that is going to be our Michelson's experiment, or we can say Michelson's Morley experiment. Morley experiment. Okay, so this is also one of the experiment if in case we have to, like we have to talk about the method for obtaining the coherent source of light. Okay, अब एक और हमारे पास चीज आती है, one more topic that we need to talk about, so that is going to be the conditions for sustained interference. क्या क्या conditions होनी चाहिए for sustained interference? Parents, because like obviously in conditions का भी होना important है, then only we can say that okay, so हमारा interference pattern sustain रहेगा. So what we can say, if in case we have to obtain a clear and like stable interference pattern, so some of the conditions have to be there. First condition we can say हमारे पास क्या होना चाहिए, light source must be monochromatic. Light source must be monochromatic. ठीक है. आफ्टर दिस, सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, सो व्हाट वी कैन से, व्हिच मींस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी should be same. ओके, आफ्टर दिस हम क्या बोल सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस के लिए, कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए. कोहेरेंट लाइट सोर्स, monochromatic भी होना चाहिए, and other than that we can say coherent light source is also important. After this, the third one, what we can say that जो amplitude है, amplitude for both the waves or both the waves for both the waves should be nearly equal for good contrast between the fringes. And then एक और condition which is important, the fourth one, that is going to be, so waves should propagate in the same direction. Okay, so these are some of the conditions. So these are the conditions for sustained interference. So I hope that this part is clear to everyone. So I hope that today's part is clear to everyone. So make sure to like the video, share the video, and subscribe to the channel, that is Engineering Insights Physics Tales. And stay tuned for future videos also. Okay, bye everyone, and we'll meet you in the next video.